Hello everyone, welcome back to Udyanam. In this video, we'll be discussing about some of the gardening basics which we need to understand before we start a garden, like what all a plant needs, how much sunlight, water, type of soil, their climatic conditions and all. Because there are variety of plants and each type of plant has a unique personality and likes different things. So in this video, we'll be discussing about two of the gardening basics, sunlight and the watering conditions for a plant. From sunlight, the plants make their food through the process of photosynthesis. Vegetables, fruits and flowers needs good amount of direct sunlight. सो मेक श्योर कि आप जब वेजिटेबल्स फ्लावर्स या फ्रूट्स वाले प्लांट्स जब लगाते हैं तो उनकी लोकेशन ऐसी हो जहाँ पे आपको 4 से 5 घंटे की एटलीस्ट डायरेक्ट सनलाइट मिलती हो. Beside fruits and vegetables, succulents also grow well in direct sunlight. On the other hand, इंडोर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वो इनडायरेक्ट सनलाइट और पार्शियल शेड वी कैन से इसमें अच्छे से ग्रो करेंगे, उन्हें डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती. व्हेन इट कम्स टू वाटरिंग, देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्लांट एंड द वेदर कंडीशंस. वाटर ओनली व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड. जब आपको लगे कि सॉइल ड्राई है तो आप पानी दें, अदरवाइज टू मच ऑफ मॉइस्चर कैन किल योर प्लांट. अगर आप बहुत जल्दी जल्दी पानी देते हैं तो वो पानी भी किसी यूज़ का नहीं होगा, क्योंकि वो वाटर ड्रेन आउट हो जाएगा पॉट से और रूट्स तक नहीं पहुंचेगा. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप स्लोली वाटरिंग करें ताकि पानी उसके रूट्स तक पहुंच सके और रूट्स प्लांट को पहुंचा सके. Roots need access to water, not the leaves. So wetting foliage is waste of water. Try to water in the morning. उससे क्या होगा, अगर आपके लीव्स पे मॉइस्चर रह जाता है तो they'll get sufficient time to dry और इससे लीव्स में कोई डिजीज़ेस भी नहीं होंगे. Now these were the basics of watering. But there are variety of plants and you need to know your plant and their watering conditions. Succulents and thick foliage plants store water in their leaves, so they need once watering in 3 to 4 weeks. On the other hand, humidity loving ferns need a good watering once or twice a week. And the outdoor plants, they need frequent watering every day or every alternate day. So every plant have their own requirements, so you must know your plant before you start your garden.